I will deal them at seriam first 267. Honorable members, I have received 48 notices under Rule 267. 45 members have demanded discussion on the ongoing situation of violence and unrest in Manipur. Srimati Priyanka Chaturvedi and Shri Sushil Kumar Gupta, members have demanded discussion on situation in both Manipur and Haryana. Shri P. Wilson, member, has demanded discussion on issue relating to governors. As the notices are not in conformity with the rules and my ruling dated 8 December 2022, I am unable to persuade myself to allow the notices received for today. Honorable members, I have received 19 notices for short duration discussion under Rule 176. 18 notices are on the issue of concern over pushing the agenda of the Communist Party of China by an Indian online news network, and one is regarding concern over communal violence in parts of Haryana. Honorable members, I have received 3 notices under Rule 167, 168 from Shri Tiruchi Shiva, Shri Binoy Vishwam, and Shri Alamaram Karim, members expressing their concern over prevailing situation in Manipur. Honorable members, you may recall the discussion on the same subject was initiated in the Council on 31st July 2023. There was disruption, it could not fructify. I do not wish to, one second. I do not wish to go into the background how the discussion could not take place. On 167, without going into the conditions of admissibility, I would like to confer with the leaders of the political parties, as this may be an opportunity for us to find a way out, and this I will do it at the earliest at 1 p.m. today. Would you like to say something, sir? Oh, okay. Honorable Leader of the Opposition. Only on this issue. No, Leader of the House. One second. Precisely, I need your input on 167 notices for 2 reasons. One, I have got the formal notices for the first time, but in public domain, in various newspapers, this issue has been coming up. Some of the news reports quoted that there has been consensus on the issue. I do not wish to go into that background. On the notices that I have received today, you may please indicate. Sir, 1 minute, let me. I have कभी तो बोलने भी दिया कि So we had Sir, received. Neither you nor Jairam Ramesh can have the grievance of not being allowed to speak. उनको पर्सनली बोल रहा हूँ सर, आपके माध्यम से. सर, मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी सीनियर लीडर से विपक्ष के कि मैं 4 वरिष्ठ पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं को बुलाऊं चाय पे चर्चा करने के लिए और कोई मार्ग निकालें इस विषय में. मैंने सर चारों को रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट ही नहीं किया, परसुएड करने की कोशिश की कि मेरे साथ आके चर्चा करें. 1-8 घंटे तक तो ये सिलसिला चलता रहा कि आइए बात करते हैं, आइए बात करते हैं. उसके 1 घंटे बाद एक उन 4 में से एक सदस्य मेरे कमरे में आया और कहते हैं कि हम तो आपके कमरे में चारों नहीं आ सकते, आप और आप भी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन क्या नहीं आओगे. सर जरूरी है ये सबको मानना, और इससे सेंट्रल हॉल में मिलते हैं. मैंने नाम किसी का नहीं लिया, मैंने नाम किसी का नहीं लिया. सर ये जरूरी है, सर ये जरूरी है क्योंकि मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ कि मानसिकता कैसी है, मानसिकता कैसी है कि हम आपके कमरे में नहीं आ सकते. मैं लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी नहीं हूँ, सभी के लिए काम कर रहा हूँ. मुझे कहा गया हम आपके कमरे में नहीं आ सकते, आप एलओपी के कमरे में नहीं आएंगे तो सेंट्रल हॉल में मिले. मैंने कहा नहीं, अगर आप मेरे यहाँ नहीं आ सकते हो तो मैं एलओपी के आता हूँ, और माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर और मैं हम स्वयं एलओपी के कमरे में गए.
हम स्वयं गए चर्चा करने, मैं सिर्फ मानसिकता दिखा रहा हूँ। Honorable members, बोलते हैं चर्चा करने आइए, करना हम आते हैं, आप हमें चाय पे one second, और जब मैं बुलाता हूँ तो हम आपके कमरे leader of the house, अब चर्चा इस तरीके से होती है, कंसेंसस इस तरीके से बनता है। Honorable मैं members, आपसे संरक्षण I चाहता हूँ appreciate, कि क्या ये तरीका है जिससे हम आगे हाउस चलाने वाले हैं? one second. पहली बात, दूसरी बात, one minute. I quite appreciate what has come from Mr. Keshav and Tiruchi Shiva as to who those 4 leaders were. But let me tell you, honorable members, I have had a practice that in my capacity as chairman, I will deal with floor leaders of all the parties. Now, how political parties behave is between them. To the extent the chair is concerned, if I have the benefit of one-to-one interaction with leader of opposition, I reach out to other leaders also. So I have a practice that I will be conferring with all the floor leaders. Between political parties, the mechanism may be different. So this can't be an issue here. One second. Sir, as a chairman, you have a right to call anybody. We understand. You would like to build. You like to build a confidence mechanism. You are trying to build a confidence mechanism. We understand. You can call anybody. But a leader of the house, selectively asking 4 people to reach him, is something which we object to. It is a privilege issue, again, as far as we are concerned. First of all, at the outset, I've already said I never initiated it. I received a request, can you call 1, 2, 3, 4 for a chai chat? अब मैंने और विषय भी नहीं मालूम था। अगर कोई एक व्यक्ति मुझे कहता है कि हम आपको मिलना चाहते हैं, so Dr. Keshav पे चर्चा करना चाहते हैं और मैं 4 को बुला लेता हूं, तो उसमें बताइए क्या प्रिविलेज है? और इसमें मतलब मैं अपने कमरे में, माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने कमरे में किसी को बुलाऊं, उसमें भी पहले मुझे सबकी परमिशन लगेगी, मुझे पहले देखना पड़ेगा मैं 4 को नहीं बुला, और मैंने तो इनिशिएटिव नहीं किया, मुझे तो सब्जेक्ट भी नहीं मालूम था, मुझे तो एक रिक्वेस्ट आई, उस रिक्वेस्ट के तहत मैंने बुलाया, जब फिर बुलाया तो एक व्यक्ति आके बोलता है हम आपके कमरे में नहीं। Honorable leader of the house, I'm on the chair. Honorable members, Allahabad High Court, one second. Allahabad High Court is a very premier high court of the country. When it had centennial celebrations, it came out with 2 volumes. One incident was that during summer months, a division bench was listening to the submissions of a distinguished lawyer. Now the situation was so cool, खसखस लगी हुई थी, पानी गिर रहा था, रूम का टेम्परेचर डाउन था, it was soothing, and one of the judges went to sleep. The junior judge was a very disciplined judge. He followed the senior. So difficulty with the lawyer was, how does the lawyer invite attention of the bench? The books used to be very heavy during those days. So he managed to ensure that the book falls on the ground from the table. Then I said, yes, Mr. So-and-so, what happened? And the response was, my lords, one at a time. I plead with you, let it be one at a time, and I have enough time. Okay, Mr. Tiruchi Shiva, let him respond. Sir. Thank you very much, sir. Sir, the logjam is prevailing for more than 14-15 days, sir. And the oppositions are insisting upon Rule 267 adjournment motion. And the treasury benches are insisting upon 176, a short duration discussion. We are not able to arrive at a common point. And in pursuance of your repeated appeals, sir, the India Alliance, we have evolved an alternative route. That is Rule 167, that on a substantive motion we can discuss the issue on Manipur, sir. And we have very, very magnanimously accepted it. And
One moment. He said, I have agreed to consider. We have Mark given his a words. notice to the chairman and it is under his consideration. Yes. That's what we are telling. That's what we are telling. We want to have a discussion on Manipur, sir. So we don't want to stick on to one particular level and let them also not stick to that level, sir. So we request you, sir, kindly consider this and accept. We can start the discussion anytime, sir. Now or 2 p.m. anytime, sir. Thank you very much. One And second. the nation has a right to know what happened. तो मुझे बोला गया था कि हम तो आपके कमरे में नहीं आएंगे, आप हमारे कमरे में नहीं आओगे तो सेंट्रल हॉल में मिले। अब मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो पूरे टाइम सेंट्रल हॉल में जाके वॉकआउट करके या कुछ सेंट्रल हॉल में बैठा हूँ। मैंने कहा पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर और मैं आपके कमरे में आएंगे और सर हम दोनों एलओपी के कमरे में बड़े इज्जत के साथ गए, हमने कॉफी मांगी, पी। अब सर विषय समझे, वहां पे एक गठबंधन जो है, घमंडिया गठबंधन, इस घमंडिया गठबंधन के सब लोग थे। वहां ये प्रस्ताव हमारे समक्ष रखा गया और साथ में कंडीशन लगाए गए, सर साथ में कंडीशन लगाए गए, सर ये जानने की तो हमको आवश्यकता है। Who has given those names of 4 leaders? Why not all the leaders? अगर वो कहते हैं कि मैं, आप देखिए वहाँ क्या हो रहा है, अगर वो कहते हैं दिग्विजय सिंह जी जो बोल रहे हैं मुझे पूरा करना चाहिए तो नाम ले सकते। सुनो वो एक सेकंड, प्लीज एक सेकंड, वन सेकंड, ऑनरेबल मेंबर्स, one second, honorable members, one second, please. Honorable members, when we interact informally, we share many secrets. I would not appreciate either side to reveal details thereof. I would request leader of the house also, this side also. If you have to find out the 4 names, please do it informally outside the house, because sir, I do not appreciate any member, this side or this side, revealing content of our discussion which has taken place outside the house. You are required to deal strategically, diplomatically, politely, persuasively, and that must be kept outside the house, because this is a respect every member is entitled. I did not take any name, but if Digvijay Singh insists, I want response. I'm ready to say the name right now. Honorable members, LOP wants, 1 second. I'm happy to give the name. Okay. But sir, important point is, you are calling a meeting just now. I would like to know from you, sir, that फिर leader of the house की क्या credibility है? और ये alliance, they are claiming they are an alliance. तो झगड़ा क्यों कर रहे हैं अगर उन्होंने कहा हमारे 4 लोगों को Honorable members, 1 second. alliance है तो फिर एक दूसरे पे विश्वास है। Honorable members, और उस मीटिंग में कई नेता बैठे थे, सर उस मीटिंग में कंडीशन लगाई कि पीएम आने चाहिए बोलने के लिए। ऐसा नहीं है कि 1667 पे तैयार है, क्योंकि मिस्टर जयराम रमेश ने अभी कहा, अभी उन्होंने कहा कि लीडर ऑफ द हाउस हैड एग्रीड, मैं उनको करेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर होने चाहिए, उसमें प्रहलाद जी और मैंने रिफ्यूज किया। ये गलत बोल रहे हैं कि मैंने एग्री किया। ऑनरेबल मेंबर्स, मैं कोई एग्री नहीं किया। ये गलत इन्होंने विड्रॉ करना चाहिए। फाइन, ओके, मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। ओके मिस्टर गोयल, यू हैव मेड योर पॉइंट। दूसरी बात, फिर उन्होंने कहा हमने 5 मेंबर ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई है और हम आपको एक प्रस्ताव देंगे। मैंने एक वरिष्ठ सदस्य को जो उनकी पार्टी की दूसरी पार्टी से उनको फोन किया कि भाई वो रेजोल्यूशन क्या है, मिस्टर गोयल, यू मेड योर पॉइंट। आज तक वो भी नहीं आया। मेड योर पॉइंट। तो ये हवा में फिर हमारे 5 लोग और वो साथ में मिलकर ड्राफ्ट करेंगे। हमारे 5 लोगों को बुलाया नहीं। मिस्टर गोयल, you made your point. Please take your seat now. Make your point. क्या मतलब? Honorable members, ना हमारे लोगों को Mr. बुलाया। Tiruchi Shiva, honorable members, leader of the house, ना हमारे लोगों को please take your seat. ना हमारे साथ चर्चा की, ना कोई कॉमन रेजोल्यूशन बनाया। ये कमिटमेंट उसने खुद ही दिया था, तो ये तय करे। और honorable members,
I do not appreciate. गुमराह करना बंद Ask them to करें। sit down, take your और seat. दूसरों के साथ क्या बात हुई Ask them to इसको take it. मिसरिप्रेजेंट कर रहा है Mr. जरा President. वैसी बात करें। Mr. President, take your seat. Please take your seat. All of you. Mr. Vajpayee, please take your seat. Take your seat. I would say, one second. Mr. Tiruchi Shiva has raised a valid point that this stalemate or logjam is not earning us any respect. Further, we are not able to debate Manipur. He has come out with a way. We may, one second, please. We may accept it, we may not accept it. I personally feel the two sides have taken rigid stand. One, 267, 176. Now, if there can be a meeting ground, when something has emanated, I only want honorable members to respond to that limited and leader of the opposition. And please, no disturbance. No, please, no disturbance. I will name a person who disturbs. This side or that side. Have it from me. No, please take your. Okay, but please take your seat. Sir, Only leader of the opposition. Sir, I request you to focus on 167. Rest is your discretion. But right now, on 167. नहीं देखिए मेरे रूम में लीडर ऑफ अपोजिशन सॉरी हाउस लीडर आए थे नहीं सर, ये निकला तो ठीक। तो मेरे रूम में आए थे और वहाँ वो ये चाहते थे कि किसी तरीके से 176 ना 167 सर। नहीं 167 तो अब की बात है, पहले तो उन्होंने जो माना था, हाँ, तो उसी पर आप चर्चा कीजिए और सफिशिएंट टाइम हम देने के लिए तैयार है, इसीलिए आप उसी पे चर्चा। तब हमारे लोग ये कहे कि आप लोग 267 को नहीं मान रहे और हम लोग उनके जो 176 को नहीं मान रहे, तो वाया मीडिया एक कोई मध्य मार्ग निकालना चाहिए। हाँ? अरे पहले उन्होंने अलाउ किया था ना, कौन सा किया था, फिर से सुनिए प्लीज। सर Mr. Goel, see that there is order in the house. तो एक मध्य मार्ग निकालना चाहिए, तो वो कौन सा मध्य मार्ग हो सकता है? तो किसी ने और कुछ कहा, किसी मेरे को कुछ काम था, अर्जेंट जाना था, तो मैं उनको बोला मेरी ऑफिस खुली है, आप इस्तेमाल कीजिए, सब बात कर लीजिए, जो कुछ भी चाय पानी कुछ भी होना है तो दे दी। तो वो लोग बात करते रहे, मैं चले गया, तो मैं वहां से चले गया। प्लीज। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, आप बैठ के तय कर लो, आप सभी बैठ के तय कर लो किस सेक्शन के किस रूल के तहत चर्चा होना चाहिए। तो उन्होंने चर्चा कर ली, उसमें एक रेजोल्यूशन के तहत 167 के तहत चर्चा कर सकते हैं। तो अब इसमें दिक्कत क्या है? आप ही ने माना, आप ही ने प्रपोजल दिया, फिर यहाँ मेरे रूम के बाहर आके और दूसरा बोल रहे हैं। तो इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि 167 को आप मान्यता दीजिए, चर्चा होने दो, प्रधानमंत्री जी आने दो और उनके सामने हम अपनी विषय रखें। अरे क्या प्रधानमंत्री आने से क्या होने वाला है? क्या परमात्मा है क्या? ये सदन नहीं, क्या परमात्मा है? क्या परमात्मा है वो? ये कोई भगवान नहीं है, ये भगवान नहीं है।